one of my live sessions. My name is Anushka and I am a professional nail artist. आज के हमारे नेल आर्ट में हम सीखने वाले हैं ब्लूमिंग रोज फॉर द वैलेंटाइन वीक. सो ये नेल आर्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिकली जेल पॉलिश ही यूज करने पड़ेंगे. आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द नॉर्मल नेल पॉलिश गर्ल्स, बट दिस नेल आर्ट इज specifically for my gel nail lovelies, and it is specifically for Valentine's. So we are going to be doing a blooming rose on our nails. ठीक है. तो सबसे पहले तो we are going to be starting with my nail. Okay. Now मेरे पास दो nail है. I'm going to show two variations of this nail art. One is pink on white and one is red on black. So basically एक dark base के साथ दिखाऊंगी और एक light base के साथ दिखाऊंगी, so that you can decide आप black heart वाले हो या white heart वाले. So when this is done, I'm also going to be changing the shape of these nails. So one मैं एक square shape में ही रखूंगी और अभी के लिए मैं इसको पॉइंटी स्टिलेटो शेप में करूंगी. सो व्हाट आई हैव ऑन माय नेल राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड एज एन आलमंड शेप. Okay, stiletto is much more pointier than this. It's like a straight point. So सबसे पहले तो let's start with it. So sorry. ठीक है. सबसे पहले we will be deciding a point. So the straight center point is this one. We have marked it. अब हम करेंगे straight cut on both the sides. कल हमने जो कट किए थे वो थोड़े साइड में थे, so that we can give it a round shape. But today we are going to do straight snip. Okay, so do a straight snip. Okay, do a straight snip to the point. Now दूसरे साइड से भी हम वैसे ही करेंगे. ओके, सो आप देख सकते हो दोनों तरफ से मैंने स्ट्रेट स्निप कर लिया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू बी बफिंग इट आउट. So I'm taking my filer. This is a 100 into 180 grid ka filer, and I will start shaping the nails first from the side. Make it into a straight line. Okay. Now the other side. Okay. Now if you see from the straight, अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी. इसको और क्लोज करने की कोशिश करूंगी. Okay, so if you can see, the tip is quite straight, but यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो it's a little on the squarer side. So I'm going to shape that as well. So remember, यहाँ पे हमारा cuticle होता है. So be sure that you are not filing it on the nail bed, like nail cuticle area, the side. Make sure आप उसको ऐसे fit करके फिर file कर रहे हो. जितना स्ट्रेट होगा उतना स्टिलेटो आपका अच्छा दिखेगा फ्रॉम द साइड्स.
ओके, सो एज यू कैन सी इट्स अ नाइस शार्प पॉइंटी साइड. इसके अलावा अगर आप और पॉइंटी करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू. लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन स्टिलेट, आई मीन जो हमने कल किया था और इसमें. Yesterday's nail was quite rounded. Yesterday's nail was quite rounded, and this one, if you can see, it's very sharp and pointy. So that's the difference between a stiletto. आप और इसको pointy कर सकते हो. Just make sure आप straight रख रहे हो अपना filer. Okay. So now we have got a shape. अब इसको हम prep and prime करते हैं. So I will take a soft buffer. Okay, and I will remove all the shine it has on the tip. नॉर्मल नाखूनों पे आपको इसको यू हैव टू फर्स्ट फाइल इट विथ द फाइलर to remove all the shine on the nails, and then you have to do it. Okay, स्मूथ कर देता है बफर आपके लेयर को, एंड नाउ यू कैन सी इट्स ऑल मैट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर पॉलिश. ये वाली नेल को हम प्रेप करके रखते हैं. सो इसमें मैं बस शेप में जो है वो रखने वाली हूँ. आई एम जस्ट रिमूविंग इट्स शाइन. अब ये जो ब्लूमिंग, कोई कोई नेल आर्ट है ना ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है कि आपको आपके आर्ट का आपकी आर्ट की या क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती. ऑल यू नीड इज द राइट प्रोडक्ट्स एंड यू कैन जस्ट नेल एनी नेल आर्ट. ओके, सो ये दिस इज वन ऑफ दैट नेल लुक्स, नेल आर्ट्स where you need the right products and you need a little bit of creativity. अगर आपकी क्रिएटिविटी सही है, if you are very abstract, तो ये लुक आपके लिए है. ओके, नाउ आई हैव माय बोथ माय शेप्स रेडी. सो फर्स्ट मैं इस पर डार्क वाला करूंगी एंड आई विल डू दिस. सॉरी, इस पर लाइट वाला करूंगी एंड इस पर डार्क वाला करूंगी. सो फर्स्ट आई एम गोना शो यू द लाइट वन. सबसे पहले तो लेट्स कलेक्ट ऑल द डर्ट which is there. Okay, so one step at a time. Let's first put base coat. I'm using the Swiss Beauty UV Gel Professional Base Coat. It's in the number. Okay. Base coat क्या करता है? Base coat will always give your nail a little bit of that smooth effect, number one. And number two, it gives you a plain canvas to work on. It becomes a little stickier. Base coat हमेशा थोड़ा सा sticky होगा to make sure that your polish is there intact रहेगी. And it will also give you a thickness to the nail. अगर आपकी nails बहुत ही पतली है, बहुत ही brittle है, तो a base gel is your base coat is your best friend. ओके, इसको मैं रखूंगी अभी 60 सेकेंड्स के लिए. ऑलवेज कीप योर पॉलिशेस अ लिटिल फार और अपोजिट टू योर यूवी लाइट. आपने अगर पास में रख दी तो आपकी जो पॉलिश है वो सारे सूखने चालू हो जाएंगे एंड दैट विल बी वेरी क्विक. ओके, सो मैं इस नेल को भी प्रेप कर लेती हूँ. नाउ दैट आई हैव टाइम, let me keep it away from the UV light and I will start painting this one as well. एंड जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि यू नो बेस कोट से आपको थिक करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो कोट लगानी है बेस कोट की वो थिक लगानी है. नहीं, अप्लाई इट एज अ नॉर्मल नेल पॉलिश एंड इट विल डू इट्स मैजिक. ओके,
सो हमारा ये वाला बेस कोट रेडी है. मैं इसको डाल देती हूँ अंदर बेक होने के लिए फॉर 60 seconds. Okay, so हमारा ये वाला nail ready है with the base coat. Now I'm going to show the lighter version on, the darker version on this. So मैं पहले लगाऊंगी dark base coat. So I'm using blackest black polish. ये Shills से है in the number 38, sorry, 038 black coat है. मैं इसको लगाऊंगी. आपको प्रोडक्ट बहुत ही कम लेना है, ना के बराबर, because the bristles will already have all the color. So I'm just painting it. And for black as well, आपको 2 कोट तो लगेंगे ही. So don't worry. Make sure you are very much clean on the cuticle area. इसकी आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना if you're going to start working on nails, कि क्यूटिकल एरिया क्लीन रहे. अगर आपका क्यूटिकल एरिया क्लीन नहीं है देन योर ने लुक विल, जो भी आप कर रहे हो बहुत ही शैबी लगेगा. सो मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन दैट. ओके, सो नाउ दिस इज डन. मेरा फर्स्ट कोट इज डन. हमेशा फर्स्ट कोट आपका जो है वो ब्लैक लगेगा, बट वंस इट्स ड्राइड इन द यूवी लैम्प यू विल सी व्हाट मैजिक इट डज. इसके ऊपर मैं लगाती हूँ व्हाइट, because I'm using Shills का ही white in the number. इसका नंबर चला गया. I'm so sorry. Okay. So let me take a very little amount. Okay. And now I will apply it on the nails. White color refrain करना if you are using it on a dusky hand. Because white color से क्या होता है, white color से आपके अगर if you have tan on your hands and the client doesn't want the tan to be more visible, then try to refrain using light colors, because that's always going to enhance the darkness, the tan. So अगर आपको idea नहीं है, if the client wants that, refrain from using the light color. आप सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो only when you're using French tips अगर आप करोगे तो ही go ahead with. अभी मेरा white भी लग चुका है, तो अब मैं white रख देती हूँ on the base. I am just for your reference, मैं उल्टे साइड कर रही हूँ so that my nail pins does not go bad. Okay, now that black is done, मैं एक और कोट लगाऊंगी इसका, बहुत ही हल्का वाला कोट. So remove whatever is there on your tip. Okay, and we'll polish it once again. Make sure you cover the tips as well, वरना problem हो जाएगी. Now you can see it's pitch black, and मैं इसको रख दूंगी in the nail, and I'll also do the white once more. Now this is done. I will put the white and keep it for 60 seconds. अब white भी कर लेते हैं. So I'm prepping both the nails first. मैं nail art आपको एक एक करके ही दिखाऊंगी. It's the same nail art, कुछ difference नहीं है. It's just that I'm using different colors and different bases so that you understand किसके ऊपर क्या अच्छा लगता है and you understand कि आपको क्या पसंद आ रहा है. Okay, so I'm applying the second coat of white. And जैसे मैंने कहा, please refrain using white or light colors on your on people or on client who have tan on their hand and they don't want that tan to be visible. क्योंकि अगर ये हुआ and then फिर client will be like,
ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे मेरे हाथ बहुत काले लग रहे हैं, देन यू आर इन द फॉल्ट. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप क्लाइंट को अच्छे से समझाएं और बताएं. Okay, now we are ready with our black tip. This is what it will look like after two coats, and two coats are necessary, guys. कितना भी gel polish thick हो, कुछ भी हो, two coats will always be necessary. Now, मैंने जैसे कहा आपको कि कोई नेल आर्ट ऐसे होते हैं जिसमें you don't need your art and your creativity much, but you need the right product. And for this nail art, the right product is a blooming gel. ओके, तो और मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि दिस नेल आर्ट इज ओनली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू बी डूइंग इट विद जेल पॉलिश. अगर आपने नॉर्मल पॉलिश में किया तो दिस थिंग विल नॉट ड्राई ऑफ अंडर हीट और अंडर फैन और नॉर्मल ड्राइंग टेक्निक से. यू विल नीड अ यूवी लाइट फॉर दिस टू ड्राई. Okay, so this polish and this nail art is only and only for gel polish people, and this is the product which you need for this blooming gel. Okay, blossom gel is what I've got. This is from Shills. ठीक है, इसको ब्लॉसम जेल बोलते हैं, ब्लूमिंग जेल बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स आप कोई भी यूज कर सकते हो. ये क्या करता है, इसके इसके एक कोट के लगाने के बाद आप कोई भी कलर उसके ऊपर डालो, इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. ओके, सो आई एम गोना शो यू हाउ. टेक अ वेरी मॉडरेट अमाउंट, ज्यादा मत लेना, क्योंकि फिर जो आपको करना है वो सब वियर्ड और बिखर जाएगा. बट मेक श्योर ये लगाने से पहले आप आपके पॉलिश जो है वो बहुत अच्छे से सेट कर रहे हो. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, ब्लूमिंग जेल हमारी लग चुकी है, एंड मेक श्योर आप पूरे एजेस पर अच्छे से ब्लूमिंग जेल लगा रहे हो. नाउ इसको अच्छे से क्लोज करके, टाइट क्लोज करके, आई एम गोना कीप माय नेल लाइक दिस, एंड आई एम गोइंग टू टेक द रेड कलर, बिकॉज मैं रेड के ऊपर ब्लैक के ऊपर रेड करने वाली हूँ. I'm taking a drop of it, not too much, because it's going to spread. You guys, it's going to spread. So मैंने एक drop of red polish लिया. I am taking a छोटा brush, nail art brush, a normal small one. Blooming gel को हमने cure नहीं किया है. This is not cured. Going to take the red. Okay, and you have to take a very small amount, guys. ये बहुत फैलता है, सो डू नॉट यूज वेरी बिग प्रपोर्शंस. सबसे पहले तो मैं रोज के जो तीन ये होते हैं, ओके, तीन कलियां बनाऊंगी जो बीच में है सबसे. यू कैन सी इट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग टू स्प्रेड. सो अगर आप अभी देख सकते हो, नाउ मैं इसको रोज के तरह रोज के पेटल्स बनाने चालू करूंगी. ओके, अलग अलग डायरेक्शंस में यू नीड टू मेक द पेटल्स. एंड मेक श्योर हर पेटल के एंड्स और एजेस जो है वो बहुत ही पतले हैं. ओके, अगर वो पतले नहीं हुए तो आपका रोज रोज के तरह नहीं लगेगा. सो बहुत ही रैंडमली जस्ट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द लाइंस. इफ यू कैन सी, द रेड विल बी वेरी लेस. सो अभी मैं इसको पहले क्योर कर लेती हूँ. यू विल सी इट मेजरली इन द वाइट बैकग्राउंड. तो मैं जब इस पे करूंगी तब आपको दिख जाएगा, समझ जाएगा. ठीक है, इसको मैं अच्छे से साइड में रख देती हूँ, बिकॉज दिस इज cured, not cured. आई विल डू अनदर कोट, सो वेट फॉर इट गाइज. आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक पर, और ब्लैक पर आप
हमेशा डार्क कलर्स ही यूज करना. अगर आपने लाइट कलर्स यूज किए, इट्स नॉट गोइंग टू बी विजिबल. सो ब्लैक के ऊपर यू यूज समथिंग विच इज अ लिटिल ऑन द डार्क एंड डीप साइड. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रास्ट थिंगी, आई नो, बट आपको अलग यूज करना ही पड़ेगा. ओके, मैं 14 सेकेंड्स में निकाल रही हूँ इसको. एंड आई विल डू अनदर लेयर ऑफ द रेड. तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम. ओके. अब ये ब्लूमिंग जेल भी जो है वो एकदम स्टिक हो गया है. ठीक है, मैं रेड से सिर्फ इसको शेडिंग दे रही हूँ. आई एम जस्ट गिविंग द शेडिंग विद द रेड बिकॉज ब्लूमिंग जेल से हमारा, तो जहां जहां मैंने स्प्रेड किया था वहां वहां उसको मैं एनहांस कर रही हूँ विद द रेड पॉलिश. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, प्लीज 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 मेक श्योर कि आपके जो टिप्स है उसके एजेस जो है दोनों साइड में पेटल्स के, उसको थोड़ा सा पतला करना. ओके, एंड दैट्स हाउ योर नेल विल लुक. मैं इसकी ब्राइटनेस कम करके आपको एक बार दिखा दूंगी, बट अभी आई एम कीपिंग इट फॉर. अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑन द वाइट बेस. अब आपको पता चलेगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. क्योंकि अभी तक आपको कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा होगा. यू मस्ट बी लाइक, क्या ही बन रहा है, क्या ही हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू टेक सम हॉट पिंक कलर. दिस इज बाई जेलिश इन द नंबर, सारे नंबर्स, 43. ओके, आई एम गोइंग टू टेक a dot of pink. One single dot is more than enough, guys. Please अपने products waste मत कीजिए. I'm going to take my blossom gel once again and will be coating it over my polish. Okay. इस ब्लॉसम जेल से आप कोई भी शेप्स, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बना सकते हो. बट सिंस इट्स वैलेंटाइन, आई एम डूइंग अ रोज. यू कैन डू अ हार्ट, लाइक अ ब्लूमिंग हार्ट. You can do a blooming star, whatever you feel like. Okay, now you can see what am I going to do. ये है हमारा white base. I'm taking the dark pink and I'm making three beach में के petals, which is usually there on the rose. So I'm just going to make one, two, and three. Okay, ये है हमारे basic petals. So if you can see, they are starting to spread. जैसे ही they are starting to spread, make the rest of the petals. So बी वेरी रैंडम, बट उनके पेटल्स के जो एजेस है वो पतले रखना. ओके. ओके, और मेक श्योर करना कि आप सर्कल शेप में ही जा रहे हो. बहुत ही लाइट हैंडेडली करना. कोई घाई करने की जरूरत नहीं है. जस्ट बी वेरी पेशेंट एंड वेरी. एंड इन थ्री डॉट्स को मैं वापस बनाऊंगी जस्ट टू एनहांस
and give it a rose shape. Okay, so now I will go quickly and इसको set कर लूंगी under the UV light lamp for 60 seconds. Okay, now you can see this. Okay, I'm going to highlight it with a little bit of pink color. Just so it gives you a clear vision. But red rose and on black background looks pretty good. Okay, we'll let this also sit for a while. इसको मैं निकाल दूंगी and will enhance the rose with some red color. Why the red color? Because red is the darker color for pink. और जैसे मैंने कहा आपको, आप ये नॉर्मल पॉलिश पे ये नहीं कर सकते. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन नॉर्मल पॉलिश बिकॉज वो सूखेगी ही नहीं. ओके, I've removed this. I'm keeping both of them for 60 seconds now. And we'll be finishing it off with some top coat. There are two options. You can always use some matte top coat as well. You can use some shiny top coat as well. मैं matte use कर लेती हूँ for the black one so that you can see what's the action, and I will use normal one for the white base. एंड मेक श्योर दे आर कम्प्लीटली सेट. लाइक 60 सेकंड्स. अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा है कि थोड़े एजेस पे थोड़ा सा शाइनी लग रहा है, थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, मेक श्योर आप क्लाइंट को अपने बोल दो कि यूवी लैम्प में ऐसे ऐसे हाथ करे सो दैट इट इज सील्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द टॉप. कभी कभी एंगल क्लाइंट हमारा ऐसे रखता है हाथ, ऐसे रखता है हाथ, तो कभी कभी ऐसे ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड नहीं होती. ओके, now these are the two nails as I said, but as you can see, this will always look good because it goes in a circle shape. ये आजू बाजू के जो हो जाता है that doesn't look good, but definitely the white looks good if you want to show the rose. अब मैं इसके ऊपर टॉप कोट लगा लेती हूँ. नॉर्मल टॉप कोट फ्रॉम स्विस ब्यूटी. टॉप कोट लगाने में कोई कंजूसी मत करना. ओके, द मोमेंट यू डू अ लिटिल बिट ऑफ कंजूसी in top coat, it is always going to ruin your nail polish. So अब ज्यादा लोगे थोड़ा सा तो ग्लाइड बहुत इजीली करेगा एंड यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर. अगर देखो क्लीन है मेरा ब्रश, अगर आपने ये ढंग से नहीं किया और आपने अगर आपका पॉलिश जरा भी ड्राई नहीं था और इफ यू वुड हैव अप्लाइड द टॉप कोट, तो पॉलिश जो है वो आपके टॉप कोट के ब्रश पर आ जाती. नाउ आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी यूवी जेल इन द मैट टॉप कोट शेड. सो same deal with this. Conjuicy mat karna with the top coat. Make sure you apply it everywhere in abundance. And edges तो बिल्कुल ही मत भूलना. Okay. And now I will set both of them for again. I will cure them for 60 seconds. अब मैं polishes निकाल देती हूँ so you can see what's happening. Both of them are under the lamp and 46-45 seconds. आप इस तरह से कोई भी कॉम्बो में कोई भी कलर में यू कैन डू.
not necessarily red or white or pink or not necessarily ये colors. आप किसी भी बेस पर कोई भी colors, purple roses बना सकते हो, आप blue roses बना सकते हो, आप yellow roses बना सकते हो, whatever you want. Okay. So 17 more seconds to go. यही मेरी थी कि क्योर होने के लिए then you get bored, but then when you are doing all the 10 nails, आपका जब तक ये हाथ क्योर हो रहा है तब तक you need to finish this hand, and जब तक ये fingers क्योर हो रहे हैं तब तक you need to finish this hand. आपको इतनी प्रैक्टिस करने की टाइमली ये होना चाहिए. Okay, now I'll remove both of them. Now you can see. I think now you can see the rose on the black one, because मैंने बोला जैसे आपको कि okay, this one's not cured, as you can see. ऊपर से I'll keep it for 10 more seconds. And this one's cured. This one's a typical top coat. So proper ये pink rose आपको दिख सकता है. ठीक है? And this one, it got cured now. And this one is a matte rose. So you can see black के ऊपर detailing वैसी आई है. So these are the two blooming roses, you guys. One is in matte and one is in white. सॉरी, शाइनी टॉप कोट. आपको जो पसंद है आप कर सकते हो, बट मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगी कि हमेशा स्टिलेटो शेप रखना एंड हमेशा पिंक एंड वाइट करना विथ अ ग्लॉसी टॉप कोट. मैट इज ऑल्सो फाइन. इफ यू वॉन्ट ग्लॉस देन यू कैन गो एड विथ ग्लॉस, बट मेक श्योर कि आप पिंक एंड वाइट यूज करो. एंड मेक श्योर अगर आपकी क्लाइंट की स्किन जो है वो टैंड है तो try to use a lighter pink color or something which is a little on the beige side, but not completely white, because ये जो edges है इस पे client will never be happy, because उससे आपकी client की nail जो है वो थोड़ी सी dark दिखेगी. Okay, so these are the nails. This is for today's session. Blooming Rose for Valentine's. I hope you learned something out of this session, and stay tuned for the next session. We'll be coming back. Bye bye.